वेलकम टू दिस चैनल। दोस्तों आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कुछ पेडागोजी क्वेश्चन जो सीटेट केबीएस एनबीए जो टीचिंग एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैनल में बहुत सारे इस टाइप का वीडियो जो सीटेट केबीएस एनबीएस का तैयारी कर रहे हैं इसके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस है। चैनल में जाकर एक बार देख लीजिए। इस टाइप का वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट जो क्वेश्चन है। द वर्ड पेडागोजी मीन्स, पेडागोजी का मीनिंग क्या है इसका? ऑप्शन देखिए, टू गाइड द चाइल्ड, टू लीड द चाइल्ड, टू एडुकेट द चाइल्ड, टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड। तो इसका आंसर होगा बी, टू लीड द चाइल्ड। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ एजुकेशन, गाइडिंग स्टूडेंट, लर्निंग प्रोसेस और टीचिंग मेथड। तो पेडागोजी क्या है, कौन सा प्रोसेस है? जो टीचिंग प्रोसेस है इसका आंसर। Next, third question, which one of the following indicates child's physical growth? Negative, quantitative, qualitative and positive। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा quantitative। तो physical growth is a quantitative process। Next, the best method to study growth and development of a child is psychoanalytic method, comparative method, development method, statistical method। कौन सा important method होगा जो growth and development के लिए बेस्ट मेथड एक्चुअली? तो आंसर होगा सी, डेवलपमेंटल मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जॉन डीओए स्कूल इज ए डैश इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज ए डैश प्रोसेस। कौन सा आंसर होगा? सोशल, सोशल है, सोशल और फिजिकल, लॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल, एनवायरमेंटल और साइकोलॉजिकल। कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर होगा जो ए, सोशल। सोशल मतलब जो अकॉर्डिंग टू जॉन डी स्कूल इज ए सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड एजुकेशन इज ए सोशल प्रोसेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग द ब्लूप्रिंट फॉर ए टेस्ट? तो ऑप्शन क्या क्या है? टॉपिक, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, फॉर्म, क्वेश्चन एंड टीचिंग टाइम। तो कौन सा नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन व्हाइल प्रिपेयरिंग ब्लूप्रिंट? कौन सा कंसीडर नहीं होगा इसमें? बाकी सारा कंसीडर होगा एग्जाम के लिए जो टेस्ट क्वेश्चन पेपर बना रहे इसका ब्लूप्रिंट के लिए। तो आंसर होगा डी, जो टीचिंग टाइम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्वेश्चन बनाने के लिए। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रन डेवलप एक्सट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग सेंसरी मोटर। कौन सा स्टेज? प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। तो इसका ईआर आपको याद है, सेंसरी मोटर जैसे 0 to 2 ऐसे करके ईआर तक होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। नेक्स्ट, which one of the following is measured by continuous comprehensive evaluation? तो holistic development, developmental of creativity, development of experience, development of divergent thinking। तो ए होगा, आंसर होगा holistic development। which one of the measured continuous comprehensive evaluation? तो इसके लिए होलिस्टिक डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए अभी स्कूल में होलिस्टिक डेवलपमेंट कार्ड बना रहे हैं। Next, the idea of practical learning means education should apply to the society, practice, real world और abstract knowledge। कौन सा आंसर होगा इसका? आंसर होगा सी, रियल वर्ल्ड के लिए जो प्रैक्टिकल। अभी एनईपी में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रैक्टिकल लर्निंग मीन्स जो रियल वर्ल्ड थिंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द इन CF 2005 द मैथमेटिक्स करिकुलम शुड बी। मैथमेटिक्स करिकुलम क्या होना चाहिए? कोहेरेंट एंड स्टैटिक, एम्बिशियस एंड स्टैटिक, स्टैटिक एंड एक्टिव ओरिएंटेड, एम्बिशियस एंड कोहेरेंट। तो क्या होना चाहिए? आंसर होगा एम्बिशियस एंड कोहेरेंट होना चाहिए मैथमेटिक्स करिकुलम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following can be considered as a base to develop algebraic thinking among primary grade learner? तो इसके लिए कौन सा आंसर सही होगा? देखो ऑप्शन पढ़ लो। इसके बाद आंसर होगा इसका ए ऑप्शन सही है, दैट इज स्टार्टिंग विथ सिंपल पैटर्न एंड रिपीटिंग शेप्स एंड देन मूविंग टू कॉम्प्लेक्स पैटर्न इन्वॉल्विंग नंबर। दिस इज द करेक्ट आंसर। एल्जेब्रिक थिंकिंग, एल्जेब्रिक थिंकिंग के लिए कॉम्प्लेक्स पैटर्न एंड सिंपल पैटर्न ऑफ रिपीटिंग शेप्स इसके इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, children's mathematical reasoning abilities at primary level can most appropriately be inferred by कौन सा होगा आंसर? स्टेप बाय स्टेप कंप्लीशन ऑफ क्वेश्चन गिवन एज होमवर्क,
achievement in regular MCQ based test, analysis their errors, memorizing of formal algorithms. कौन सा आंसर होगा सही? C, analyzing their errors. तो child mathematics reasoning ability at primarily can be most appropriately inferred by analyzing their errors. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो इसमें which of the following is or are responsible for fair and failure in mathematics according to NCF 2005. तो इसमें चार ऑप्शन है, predominance of symbolic language, cumulative nature of mathematics, gender specific abilities, formative assessment techniques. तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, दैट इज 1 and 2 इज करेक्ट, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं. रेस्पॉन्सिबल फॉर फेयर, क्यूमुलेटिव नेचर इन मैथमेटिक्स and predominance of symbolic language. Sometimes we are using symbols in mathematics. So symbolic language जैसे कोई unknown term के लिए x मान लेते हैं. algebra में बहुत सारे इस टाइम का, and geometry में भी हम लोग कभी कभी shape use करते हैं, जैसे triangle के लिए एक shape होता है equals to जो symbolic language है. Next, the primary objective of a diagnostic test in mathematics is, तो primary objective क्या होगा इसके लिए? To understand the child's learning gaps in mathematics. बहुत important है. Next, which of the following can not be considered as a reason for fear and failure in mathematics? तो इसके लिए fear and failure in mathematics कौन से important होगा? Symbolic notion, classroom experience, structure of mathematics, gender difference. तो आंसर होगा जो डी, जेंडर डिफरेंस कैन नॉट बी कंसिडर. तो आंसर होगा इसमें बाकी सारा. देखो इसके लिए मैथमेटिक्स फेयर एंड फेल्योर के लिए सिंबॉलिक नोटेशन, स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स, क्लासरूम एक्सपीरियंस, कभी कभी टीचर डराता है मैथमेटिक्स टीचर, और स्ट्रक्चर मैथमेटिक्स में जो जो प्रोसेस होता है इसके लिए ये बच्चा डर जाते हैं. तो ये सही ऑप्शन है, बट हियर आस्क कैन नॉट बी कंसिडर. तो जेंडर डिफरेंस नहीं है मैथमेटिक्स में. Next one, as a teacher, select the best option to ensure your effective presence in classroom. Effective presence, तो use of peer command, making aggressive statement, adoption of well-established posture and being authoritarian. तो कौन सा आंसर सही होगा इसके लिए? C option, adoption of well-established posture. As a teacher, select best option to ensure effective presence in the classroom. Effective presence. ठीक है, adoption of well-established posture. Next one, dyslexia is associated with mental disorder, reading disorder, behavioral disorder, writing disorder. Dyslexia हम लोग कौन सा मूवी में देखा? जैसे तारे जमीन पर मूवी में देखा, जैसे behavioral disorder. Next one, which are characteristics of continuous and comprehensive evaluation. इसके लिए कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होगा? कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे सीसीई कहते हैं इसको. आंसर होगा डी, दैट इज बी सी डी. बी सी डी. It replaces marks with grades. It evaluates every aspect of students. It helps in reducing examination phobia. Continuous टेस्ट लेंगे तो एग्जाम फोबिया दूर होगा. एंड एस्पेक्ट, एवरी एस्पेक्ट, कभी कुछ चैप्टर टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है वो देख पाएंगे. मार्क्स विद ग्रेड्स, रिप्लेस मार्क्स विद ग्रेड्स, इसका जगह ए ले लेगा. जैसे कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होगा तो कौन सा बच्चा इंप्रूव कर रहा है वो देख पाएंगे. Which one of the following statement is correct in the context of multiple choice type question? In the context of multiple choice question क्या होगा? सही आंसर ए. They are more objective than true false question type question. ठीक है, करेक्ट. context true false से अच्छा होगा. ठीक है. नेक्स्ट वन, एज ए टीचर सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन टू एंश्योर योर इफेक्टिव प्रेजेंस इन द क्लासरूम. इफेक्टिव प्रेजेंट इन द क्लासरूम ऑलरेडी डिस्कस हुआ, जैसे एडॉप्शन ऑफ वेल एस्टेब्लिश्ड पोस्चर. रिपीट क्वेश्चन है ये. Next, 21 question number, effective of teaching has to be judged in terms of, effective teaching in terms of, कौन सा term से judge होगा? That is learning outcomes of the student. This is the correct answer. In which teaching method learners participation is made optional and proactive? कौन सा सही होगा इसके लिए आंसर? Answer is D, project method. That is learners participation is made optimal and proactive. Optimal and proactive method, that is प्रोजेक्ट में. तो प्रोजेक्ट में सारे बच्चे एक साथ काम करेगा. ठीक है. ग्रुप डिस्कशन में कभी कभी बच्चे, कोई बच्चे डिस्कशन में ज्वाइन भी नहीं कर सकते. बाद सेशन है तो क्विज टाइप का, बेंट और स्टॉर्मिंग, जो बच्चा बोल पाएगा स्टॉर्मिंग मेथड में होगा. तो दैट इज, बट प्रोजेक्ट मेथड में सबको इन्वॉल्व होना चाहिए. Next one, which one of the following is key behavior in effective teaching? Key behavioral for effective teaching
कौन सा होगा? ये ऑप्शन से सही होगा ऑप्शन, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। इंस्ट्रक्शनल वैरायटी of question, effective teaching, instructional variety of question or strategy, that is important here. The factor G in Spearman definition of intelligence stands for, G stand for Spearman G factor जो है इसमें definition में G का meaning क्या है? जनरल इंटेलिजेंस। ठीक है, जनरल याद रखना, जनरल इंटेलिजेंस, जेनेटिक नहीं, जेनरेटिव भी नहीं और ग्लोबल भी नहीं। Next, classification of students in different groups of on the basis of their IQ tend to dash their self-esteem and to dash their academic performance। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें? बी आंसर इज करेक्ट, डिक्रीज, that is classification of students in different groups on the basis of their IQ tends to decrease their self-esteem and to have no effect on academic performance। ठीक है, बी आंसर इज करेक्ट। The concept of mental age was introduced by, mental age introduced by Thorndike और गिलफोर्ड और बिनेट और स्पेयरमैन। कौन इंट्रोड्यूस किया? बिनेट। Next, Gardner initially formulated 7 intelligence. Which among the following is not one of them? The concept spatial, linguistic, interpersonal और naturalistic। आंसर होगा डी naturalistic, बाकी सारा है। ठीक है, IQ इक्वल्स टू क्या है? मेंटल एज इंटू क्रोनोलॉजिकल, मेंटल एज chronological age into 100 was prepared by कौन प्रिपेयर किया? ए रिवाइज स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल IQ टेस्ट, रिवाइज स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल। नेक्स्ट वन, हावर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस emphasis on the unique abilities of each individual। Next one, dash intelligence is the ability to understand and discern the feelings and intention of others, while dash intelligence is the ability to understand one's own feeling and motivation। कौन सा आंसर सही होगा इसके लिए? ए इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल। फर्स्ट वन इंटरपर्सनल, इंटर, एंड सेकंड वन इंट्रा। ठीक है, याद रखना है इसके लिए। नेक्स्ट, which of the following can help in close linkage between school and community? कौन सा? regular communication और teaching guidance and advising parents। कौन सा? both are correct। ठीक है, दोनों ही important है। who was the founder of psychoanalysis and gave theory of psychoanalysis? Who is founder of psychoanalysis? That is Sigmund Freud। Next, if a student is asked to solve problem, then the problem itself should not be ask a question, it should not be frightening। तो कोई स्टूडेंट अगर क्वेश्चन पूछ रहे तो then the problem itself should not be frightening, मतलब डराना नहीं चाहिए। Who said the fate of empire depends on the education of the youth? तो ये बोला एरिस्टोटल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। नेक्स्ट वन, द बिहेवियर एंड इंटरेस्ट, एटीट्यूड, स्किल्स एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स दैट a culture consider appropriate for specific gender are referred to as dash and are dash। तो कौन सा आंसर सही होगा इसमें? देखो, बी आंसर करेक्ट, जेंडर रोल्स एंड कल्चरली डिफाइंड, ये सही होगा बोथ आर। नेक्स्ट वन, एज पर जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, व्हिच वन इज करेक्ट? जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी, लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिपेंड्स ऑन चाइल्ड current level of cognitive function। This is the correct answer। Next, Lev Vygotsky views cognitive development as views कौन सा? effective adoption or to the environment process, a collaborative process, an individual activity or a unified process। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी, a collaborative process। Next question, which of the following are effective strategy to teach new concept? Presenting example, presenting non-example, promoting thinking about relationship among concept, giving a definition and encourage students to rot memorizing it। तो कौन सा आंसर सही होगा? डी आंसर, दैट इज 1 2 3। रॉट मेमोराइजिंग नहीं आएगा इसमें। ठीक है, रॉट मेमोराइजिंग ये गलत चीज है। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट क्वेश्चन,
39 इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम द टीचर शुड बी, ऑप्शन क्या है ए बी सी, देखो एक एक करके कौन सा आंसर सही होगा इसमें? आंसर होगा डी, मॉडिफाइज द करिकुलम एंड पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज टू सूट वेरिड नीड्स ऑफ चिल्ड्रन। नेक्स्ट वन, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस प्रपोज दैट, क्या प्रपोज कर रहे हैं? इंटेलिजेंस कैन बी सक्सेसफुल, प्रेडिक्ट एकेडमिक इंटेलिजेंस, चेंज ओवर टाइम, इंटेलिजेंस प्राइमरीली इनहेरिटेड, इंटेलिजेंस कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली एंड प्रेडिक्टेड प्रिसाइसली। कौन सा आंसर सही होगा? बी, दैट इज इंटेलिजेंस से चेंज ओवर टाइम, मतलब आपका एज बढ़ रहा है, इसके साथ साथ इंटेलिजेंस भी चेंज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in which of the following project in which of the following method teacher and student interchanges their roles? कौन सा प्रोजेक्ट मेथड में? reciprocal teaching, conditioned learning, receptive learning और exhibitory teaching। तो आंसर होगा रिसिप्रोकल लर्निंग, मतलब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं और जॉब रोल के लिए। दिस इज कॉल्ड रिसिप्रोकल टीचिंग। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी इज करेक्ट? तो कोलबर्ग्स की थ्योरी के लिए कौन सा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट, इट प्रेजेंट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन टू द चिल्ड्रंस। नेक्स्ट, द अदर नेम ऑफ पैवलोवियन कंडीशंस इज, तो इसको क्या अदर नेम क्या है? ऑपरेंट कंडीशन, चिंपैंजी कंडीशन और क्लासिकल कंडीशन और क्लासिकल कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लोअर क्लास प्ले वे मेथड ऑफ टीचिंग इज बेस्ड ऑन, कौन सा? साइकोएनालिटिकल, सोशियोलॉजिकल, थ्योरी ऑफ फिजिकल, प्रिंसिपल ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग। कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन ए, साइकोलॉजिकल, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a level of teaching learning? Not a level of differentiation level, memory level, reflective level or understanding level? कौन सा सही नहीं है? That is differentiation level. This one is not correct. Okay, option A. Next, with the development of technology the role of teacher in future will be, role teacher का role क्या होगा future में? That is C, to guide students, that is facilitator के तरह teacher काम करेगा। Next question, epistemology is the branch of philosophy concerned with the theory of, epistemology theory of knowledge, इसको कहते हैं epistemology। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू जॉन डीओए एजुकेशनल प्रोसेस हैज टू साइड्स, कौन सा साइड होगा? एक होगा साइकोलॉजिकल, अनदर सोशियोलॉजिकल, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट, टू साइड्स सोशियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू जॉन डीओए एजुकेशनल प्रोसेस हैज टू साइड, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, बी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, who is called the father of both realism and scientific method? So who is the called father of, that is Aristotle, father of realism and scientific method। तो आज की वीडियो इतना तक ही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। और इस टाइप का वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।